આજે સંસદના વિશેષ સત્રનો ત્રીજો દિવસ છે. બંને ગૃહોની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ હતી ત્યારે સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે મહિલા આરક્ષણ બિલ તેમના પતિ રાજીવ ગાંધી સૌપ્રથમ લાવ્યા હતા, પરંતુ તે વખતે આ બિલ લાગુ થઈ શક્યું ન હતું. સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે મારા પતિ રાજીવ ગાંધી મહિલા આરક્ષણ માટે બિલ લાવ્યા હતા, તે સમયે તે લાગુ થયું ન હતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય મહિલાઓ પાસે દરિયા જેટલી ધીરજ છે. સ્ત્રીઓએ હંમેશા ત્યાગ જ આપ્યો છે. આ બિલને લાગુ કરવામાં મોડું થવું જોઈએ નહીં. હું મહિલા અનામત બિલના સમર્થનમાં છું. આ પહેલા જાતિ ગણતરી કરાવીને ઓબીસી મહિલાઓને અનામત આપવી જોઈએ. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाज़त दिया, मैं आपकी आभारी हूँ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई. भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है. उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा. उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही. अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं. आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है. वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी. अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है. पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे. उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था. बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया. आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है. राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है. इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. ડીએમકે સાંસદ કનિમોઝીએ જણાવ્યું હતું કે મહિલા આરક્ષણ બિલ વિશે બોલતા મને આનંદ થાય છે. અમને લાગતું હતું કે અમે બધા એકબીજાને ટેકો આપીને એક સાથે ઊભા રહીને આ બિલ પસાર કરીશું. Sir, I stand here and I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. I'm just reminded of what Periyar said when I see the BJP speaking here and heckling us, that the pretense of men that they respect women and that they strive for their freedom is only a ruse to deceive them. 100 years after that, we still have not passed the bill. In 1929,
Periyar, in the Self-Respect Conference in Chengalpet, passed a resolution insisting on reservations for women in education, employment, and politics. The Women's Reservation Bill was first brought with the support of the DMK during the United Front government in 1996, September. And then Thiru Devegowda, who was the Prime Minister, brought this bill, and the Law Minister Ramnath Kalab was the one who presented the bill in this House. Then again, our respected former Prime Minister Vajpayee ji again brought this bill, but it was the UPA government in 2010 which passed it in the Rajya Sabha. And I got an opportunity to speak on the bill in the Rajya Sabha, and that was 13 years ago. And I've got an opportunity to speak on this bill again here. Yes. And we're still speaking about this bill and debating it for the past 13 years.